Hi guys, so let's look at this question here. This question is that need to find the number of common tangents of these two circles, right? See, so when you need to find this common tangent here, so the first thing goes here is I should know the general equation of circle. So equation of any circle is given by equation of any circle is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, its center is given as center is equal to minus g comma minus f, and its radius is given as under root g square plus f square minus c. Okay, so we'll try to find that basically we'll try to compare these two circles here. Okay, so let's compare with these two circles. So look at this, let's call it circle number 1 and is circle number 2 here. Okay, so for circle number 1 I can see that x square plus y square minus 6x minus 4y plus 4 is 0. So I need to compare for g and y, x, do g and f here. So now I can see that the coefficient of x here is 2g and the coefficient of x is minus 6. So 2g equal to minus 6, therefore g will be equal to minus 3. Great. Now the coefficient of y is minus 4 and here it is 2f. So 2f is minus 4. Okay. In that case I'll be getting f is equal to minus 2. Okay, so what is the center now guys? So center is equal to minus g comma minus f, that is 3 comma 2, and what is the radius now? So radius will be equal to under root g square plus f square minus c. So g is minus 3, square is 9, f is minus 2, square is 4, minus c is the constant term here, that is 4. Okay, so minus 4, that is under root 9 is equal to 3. Center is 3 comma 2 and radius is 3. I can draw this first one. Okay, for second circle now, again compare it. The coefficient of x is 2g here, so 2g equal to plus 2, so 2g equal to plus 2, so g equal to 1. Y coefficient is minus 10, so 2f is equal to minus 10, so f equal to minus 5, and now so what is center here? So center is equal to minus g comma minus f, that is minus 1 comma 5. Now radius will be equal to under root g square plus f square minus c. So what is g square? This is 1 plus 25, that is 26, and minus c. What is c here? C is 22, that is 22. That is under root 4 is equal to 2. So radius is 2 here. So I got these things, right? The center is minus 1, 5 and radius is 2. Let's call this center as A and let's call this center as B. So to find the number of common tangent, I need to see that two circles are basically intersecting each other, or two circles are not intersecting each other, or two circles are just touching each other, right? So I need to see this kind of cases. So for that I need the center distance between the centers. So I need to find the distance between the centers here. So distance between centers, that is A comma B, is that is AB, I should directly write. So AB is equal to now what happens is, if it is I can apply distance formula here. So there's a point x1 y1, there's a point x2 y2. Okay, so distance between these 2 points is given as d here, and d is equal to under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. So I can directly use here. So what is y2 minus y1 whole square? Let's call it as y2. We'll call this point as let's say it is x2, this is y2, this is x1, and this is y1. So y2 minus y1, that is 5 minus 2 whole square plus x2 minus x1 minus 1 minus 3 whole square, that is 3 square plus 4 square, that is under root 25 is equal to 5. So distance between the center is 5, right? And so what I can see that, so distance between the centers, that is AB, is the distance between the center. So AB is given as 5, and also I can see that the R1 plus R2 is also 5. The sum of radius, let's call it R1 and let's call it R2, that sum is also 5. Okay, so what does that mean? That basically means that
these two circles will be touching each other externally. For example, the diagram will be like this. Okay, then only this C1, C2, that is distance between the centers, that is AB here, it will be equal to R1 plus R2. For example, if I can draw here, this is center here and this is center here. So distance between this center is 5. Okay, this whole distance is 5, right? Okay, this whole distance is 5. And R1 is 3 and R2 is 2. So this R1 is 3 and this R2 is 2. So exactly it matches, right? That means both circles are touching externally. That basically it means that how many tangents? So 2 circles is touching externally, 3 tangents. Number 1, number 2 and number 3. So 3 tangents. So 3 tangent will be the answer for this question. So 3 tangent will be the answer for this question. So a very good question. I hope all of you got the funda behind this. Okay. So remember this equation of circle. It's very helpful. Hi everyone. So let's look at one more question here. A very good question. It says that in triangle ABC, AD is Sivian on triangle on BC, right? So let's draw a triangle ABC here. Triangle ABC. Okay. So this is A, this is B, and this is C. Now AD is a Sivian. Sivian means simply a line. No special case, like for example D is midpoint or angle bisector, AD is angle bisector, nothing like that. Okay, simple straight line joining any point on the opposite side. Okay, so I can draw from A, this can be Sivian, this can be Sivian, so all are basically Sivian only. Okay, so now in this it is given that BD is 11, DC is 25, AC is 30, AB is 18. I need to find the length of AD here. Okay, now see, such kind of questions are basically solved by 2 methods actually. Okay, I can see here, but the major and the most easiest one is similarity here. But similarity, you should observe that, right? Okay, so basically I need to find, there are 2 triangles here I can see, and I can form basically similarity between 3 pairs of triangles. Similarity can be between 3 pairs of triangle, right? For example, I can look at triangle ABD, and then I can look at triangle ADC. Then I can look at triangle ABD is similar to its question, right? I'm not proved here. I'm saying that similarity can prove between. I have only 3 pairs of triangle visible here. Okay, so let me write all those 3 pairs: triangle ABD and triangle ABC, and then this triangle ADC and ABC, triangle ADC and triangle ABC. Now you can just see here that triangle ABD, so triangle ABD and triangle ADC will never be similar, right? Because there's no pair of sides. I can say angles are not equal. For similarity, what I need AA or I need SAS. Okay, SSS तो ऐसे भी नहीं है ना, 3 साइड पता ही नहीं मेरे को. So SAS, right? So AA and SAS, right? तो ये AA similarity तो है नहीं, no 2 angles are equal, ये cross हो गया. SAS similarity 11 by 25, 18 by 30 not equal, ये भी गलत हो गया. So this is not at all possible, right? In this is not at all possible. This similarity is not possible. Okay. Now इसके बाद देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में, so obviously in such kind of question देखो AA similarity will not work. Okay, because आपके पास 2 एंगल नहीं है इक्वल प्रूफ करने के लिए, ठीक है? So only thing that works in such kind of question is SAS similarity. Okay, why SAS? Because इवन इफ एंगल इक्वल कहीं नहीं दिया हुआ है, बट ए ना आपका इंक्लूडेड एंगल हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो ये मेरे पास 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं. मान लो अब यहाँ पे 20 एंड 30 है, दिस इज 40 एंड 60 हियर. तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व दैट दिस रेशियो, दिस 40 एंड 60 रेशियो इज 2/3, 20/30 रेशियो इज 2/3, एंड इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए. मतलब अगर ये 30 डिग्री है, this should also be 30 degree. Okay, so in that case these 2 triangles are similar. That is SAS similarity. So both the ratio of sides and the included angle, that is angle between those 2 sides. हाँ, जैसे अगर ये 30 है, यहाँ पे ये 30 है, मान लो अगर आपका ना यहाँ पे ये 30 होता, तो फिर सिमिलरिटी नहीं होता. Why? Because ये 30 इन दोनों साइड्स के बीच की एंगल नहीं है. Okay, so I hope all of you got this right. Okay, now so let's try to solve this here. So if I see here, so in triangle, if I have to prove triangle ABD and triangle ABC similar, so only angle this for SAS similarity, only angle common is angle B. So I need to look around the sides, of triangle this angle B here. If I look around side of angle B in a smaller triangle,
the ratio is 11 by 18. So in a smaller triangle the ratio is 11, है ना, 11 by 18, and in the bigger triangle the ratio is, this is whole is becomes 36, right? This whole is 36. So around angle B, because angle B बीच का angle होना चाहिए, angle B has to be included angle. So 18 by 36 is 1 by 2. So these two are not at all equal, right? तो आपका ये भी similar नहीं होगा, है ना. Look at the last option और triangle ADC and triangle ABC है. अगर आप ये देखोगे तो लोग इसमें इन दोनों में एंगल C कैन बी द कॉमन एंगल ये, क्योंकि एंगल C के अराउंड साइड्स आई कैन लुक फॉर. अगर मैं एंगल C के अराउंड साइड्स देखूँ, ध्यान देना, so around angle C the one ratio I can see here is 25 by 30, that is 5 by 6, है ना, and the other ratio I can look around is 30 by 36, that is again 5 by 6, और 36 by 30 वो लिख सकते हो आप, ठीक है, that can be adjusted, but this is again 5 by 6. okay, so that means these two are similar. इन दोनों को हम similar बोल सकते हैं, है ना. so देखो, so what I'm trying to basically right now finally is, let me just draw this here. okay, so इसके अंदर लिखते हैं बॉक्स के. okay, now what I can observe here is triangle ACD is similar to triangle ABC. okay, ABC because of SAS similarity here, because of SAS similarity. okay, now अभी देखो इसमें आप सोचोगे कि साइड्स का रेशियो कैसे लेके, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट. देखो बहुत इजी है, देखना, ध्यान देना आप यहाँ पे. जस्ट डिसाइड दैट कि कौन सा ट्रायंगल आप लिखोगे न्यूमरेटर में साइड्स के लिए एंड कौन सा डिनोमिनेटर में. फॉर एग्जांपल आई डिसाइड दैट ट्रायंगल ACD विल बी इन न्यूमरेटर एंड ट्रायंगल ABC विल बी इन डिनोमिनेटर. ओके, तो देखो ट्रायंगल ACD में आपने रेशियो लिखा था 5 by 6 लिखा था, तो 5 by 6 लाने के लिए क्या करोगे आप, दिस इज DC अपॉन, तो ट्रायंगल ACD इन न्यूमरेटर DC अपॉन, अब डिनोमिनेटर में ट्रायंगल ABC का साइड आएगा, तो 25 by 30 था, तो दिस AC इज ऑल्सो साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना. तो लिख सकते हैं हम DC अपॉन AC. तो DC इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल ACD एंड AC इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज इक्वल टू 25 by 30. नाउ दिस इक्वल टू, नाउ ऑल्सो आपने फिर लिखा 30 अपॉन 36 लिखा. व्हाट इज 30? 30 वाज दिस AC, तो AC अगेन हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं ट्रायंगल ACD का पार्ट, तो 30 I can write here, this is AC is part of triangle ACD, that is 30 here, है ना, and then AC upon, now 5 by 6 कैसे आया था, आपको नीचे 36 करना था, 36 क्या था आपका BC. now BC is part of triangle ABC, ऑटोमेटिकली आ गया ये, ठीक है, that is AC by BC. great, तो both are 5 by 6, both are 5 by 6. चलो ठीक है. now this is equal to what? This is equal to third side now. तो अब third side क्या बचा है, because if देखो, if two triangles are similar, ratio of their corresponding sides are equal, होता ही है ये तो, है ना. so it always happens. so what I can do here is now, what I can do here is now AC by BC है. now third side for triangle ACD is AD, so AD is in numerator, I'll write AD in numerator upon third side of triangle ABC. तो AC और BC आपका यूज हो गया, सिर्फ AB बचा हुआ है, so upon AB. okay, so what I can write here, this is equal to what, AD is how much, मेरे को AD निकालना है, and AB is 18. AB is right. तो बेसिकली क्या आया सॉल्व करने पे, देखो 5 by 6 is equal to AD by 18. okay, therefore it can get cancelled, therefore AD will be equal to 15. that's the answer for this question. okay, so I hope all of you got this. अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी से काफ़ी, इफ़ यू डू इट सेकेंड टाइम इट्स वेरी फास्ट. यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दैट कि आपका ये रेशियो कितना है, 5 by 6 का रेशियो हो रहा है अराउंड एंगल C, तो सिंपली थर्ड साइड क्या हो जाएगा आपका, AD अपॉन 18 इक्वल टू 5 by 6. तो यू कैन जस्ट नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन वन स्टेप. सो द नेक्स्ट टाइम राइट इन वन स्टेप. ओके, वंस यू सी दैट कि अच्छा एंगल C के अराउंड सिमिलर है, रेशियो क्या आपका 5 by 6 है, तो 5 by 6 इक्वल टू रेशियो थर्ड साइड कर दो AD अपॉन 18. ओके, एंड दिस सिंपली आ जाएगा आपका आंसर AD इक्वल टू 15 आ जाएगा. ओके, जस्ट प्रैक्टिस लाइक दैट. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन. ओके, बताना कि कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर होगा. आई जस्ट चेंज द डेटा हियर. ओके, so let's say there's a question here. I'll give you a question. okay,
is a triangle ABC. Again AD is a CVN. ठीक है, ये 7 है, ये 9 है, ये 12 है और ये आपका 16 है. आपको AD का लेंथ बताने की, AD का लेंथ क्या था. ओके, जस्ट से डू बाई सेम फंडा एंड टेल मी द आंसर कमेंट सेक्शन. ओके, ऑल्सो मैं किसी और वीडियो बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चन को कोसाइन रूल से भी कर सकते थे. ओके, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करोगे, एक बार खुद से ट्राई भी कर सकते हो, ऐसे बताऊंगा मैं किसी वीडियो में. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन व्हाट वी वुड हैव डन हियर इज, आप ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप ट्रायंगल ABC करते. ओके, और आपको CVN AD दिया हुआ था इन दिस क्वेश्चन ओनली, दैट वाज BD 11, 25, 30 और 18 दिया हुआ था. ओके, AD निकालना. तो एक बार क्या था ना, आप यहाँ पे कोसाइन आप यहाँ लगाते थीटा के लिए. ओके, सो कॉस थीटा लगाते फार्मूला, वो AD के टर्म्स में आता. सो कोसाइन रूल लगाते आप कॉस थीटा, हाँ, इन टर्म्स ऑफ AD. और एक बार यहाँ पे आप लगाते कॉस 180 माइनस थीटा. सो कॉस 180 माइनस थीटा वो भी इन टर्म्स ऑफ AD आता, राइट. एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. सो आप माइनस साइन लगा के दोनों को इक्वेट कर सकते थे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ AD. ऐसे भी कर लेना, ठीक है. तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट. Okay, thank you guys. See you in the next video. Also guys, do give this Unacademy's All India mock test. Okay, so we are making it very nicely. काफ़ी अच्छे questions हैं इसमें, काफ़ी high quality quant और LRD के sets मिलेंगे. काफ़ी मैंने इसमें अपना effort put किया है, ठीक है. सो जुलाई 10 का तो हो चुका है एंड दैट अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा. सो यू कैन जस्ट इनरोल इन दैट लिंक एंड गिव दैट जुलाई 10 मॉक टेस्ट ऑल्सो. नेक्स्ट वाला अगस्त 14 को है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा काफ़ी सेक्शनल्स भी हैं वहाँ पे. सो काफ़ी टेस्ट है जो आप दे सकते हो, काफ़ी वहाँ पे टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं. ओके, सो यू कैन गिव ऑल दो सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो एंड दिस टेस्ट टाइम है अभी अगस्त आने वाला है. सो इन जुलाई एंड अगस्त दिस अ काइंड ऑफ फुल मॉक सीजन इज ऑन. बेसिकली मॉक सीजन सेक्शनल देना है आपको, इसमें टेस्ट देना है, ठीक है. सो ऑल दैट यू नीड टू डू. सो डू गिव दिस ऑल टेस्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस, एनालाइज इट. देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे ख़राब कर रहे हो, ठीक है. व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो ये सारी पॉइंट्स एनालाइज करनी है in this through this test actually. Okay, so please enroll to this. Okay, thank you.